So today we are going to start with the chapter from basic में हम लोग आज start करेंगे equivalent weight. Okay. So it is actually for mains. हाँ ये mains के लिए हमारा boards का हमने last time discuss कर लिया था, correct? boards के questions और मैंने homework भी दिए थे. तो आज हम लोग करने वाले हैं equivalent weight. बट अभी मेंस के लिए बोला मतलब ऐसा नहीं कि जो सीईटी के बच्चे वो ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे आपको इस पे भी ध्यान देना है. बहुत अच्छा कंसेप्ट है एंड कहीं ना कहीं हेल्प होने वाला है. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ठीक है. सो इक्विवेलेंट वेट इज बेसिकली गिवन टू दिस कंपाउंड और द सब्सटेंस व्हिच एक्चुअली शोज दैट the how much part of the substance combined with directly or indirectly with the 1 part of hydrogen, 8 part of oxygen and 35.5 part of chlorine. ठीक है. अगर मैं इसका definition लिखूंगा, so we can say that the equivalent weight is the number of parts by weight of this substance which combine directly or indirectly with 1.008 part by weight of hydrogen. जब आप हाइड्रोजन से कंपेयर करो तो आप बोलते हो 1.008 पार्ट वेट ऑफ हाइड्रोजन. बट अगर आप ऑक्सीजन से कंपेयर करोगे इक्विवेलेंट वेट को, तो आप वहां पे क्या लिखोगे? कंबाइंड विथ 8 पार्ट्स बाय वेट of oxygen. When you compare with the chlorine, you will write as 35.5 parts by weight of chlorine. ठीक है. अब आप बोलोगे सर ये 1.088 और 1.008 ऑक्सीजन एंड 35.5 क्लोरीन, ये होता क्या है? जैसा दी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एटम्स. ओके, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 1.008, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन 35.5. okay, so now if I talk about how to find the basic formula to find the equivalent weight, so next हम देखेंगे calculation of equivalent weight. Calculation of equivalent weight, शॉर्ट में आप उसको EQWT आप बता सकते हो. EQWT. Don't worry, I'll give time for writing. Please don't write, just focus what I'm teaching. ठीक है, कोई कॉपी नहीं करेगा, ध्यान देंगे सब लोग. So calculation of equivalent weight. Now the basic formula to find the equivalent weight is the atomic weight upon V dot F. Now V dot F का मतलब क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर. नाउ वैलेंसी फैक्टर की अगर आप बात करो, ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल HCl की बात करते हैं, तो H on dissociation, HCl on dissociation produce H plus and Cl minus. ठीक है, तो ये H का जो चार्ज है वो क्या है? +1. तो ये जो नंबर है ये इसकी वैलेंसी फैक्टर हो जाती है. तो H की वैलेंसी फैक्टर कितनी है? 1. अब Cl का जो चार्ज है that is -1. Again the number is the valency factor. So valency factor for chlorine, valency factor for chlorine is 1. Correct? अच्छा,
मैं लेता हूं एग्जांपल AlCl3। AlCl3 ऑन डिसोसिएशन मेरे पास मिलेगा Al+3 एंड 3Cl-। अच्छा, यहाँ पे Al का चार्ज कितना है? यस एनीवन? एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है? तो नंबर स्टैंड फॉर द वैलेंसी फैक्टर। चार्ज का जो भी नंबर होगा वो वैलेंसी फैक्टर। सो वैलेंसी फैक्टर इज फॉर द Al, वैलेंसी फैक्टर इज 3। अच्छा, Cl का चार्ज कितना है? तो वैलेंसी फैक्टर Cl का 1। ठीक है, तो जो भी चार्ज क्रिएट होता है उसका जो नंबर होगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, समझा फिर सबको हाउ टू फाइंड द वैलेंसी फैक्टर? चलो ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल बताता हूँ। मुझे बताओ SO4-2 वैलेंसी फैक्टर कौन बताएगा इसका? SO4 का वैलेंसी फैक्टर, SO4-2 वैलेंसी फैक्टर। यस, SO4-2 का वैलेंसी फैक्टर। वेरी गुड। यस, रिमेनिंग बाकी लोग अपडेट करो वैलेंसी फैक्टर फॉर SO4। कैसे बताया मैंने फाइंड करने के लिए? वेरी गुड आयुष, वेरी गुड मयूरेश। तो वैलेंसी फैक्टर इज 2। अगर आप इसका चार्ज देखोगे तो -2। so the number of the charge is called as valency factor. You can take it correct। वही मैं वापस बता रहा हूँ, डोंट वरी। तो जो भी आपको कैटायन या एनायन का चार्ज आता है, चार्ज का जो नंबर होगा आप उसको डायरेक्टली वैलेंसी फैक्टर ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो H+। मैं और भी एग्जांपल्स लेता हूँ। देखो, व्हेन आई से H+, तो यहाँ पे +1 चार्ज है तो 1 इज द वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब वही मैंने Al+3 बोला, Al+3, तो यहाँ पे नंबर क्या है? 3, तो वैलेंसी फैक्टर 3। वही मैंने SO4-2 लिया, तो यहाँ पे चार्ज क्या है? -2, वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? समझ में आया तृप्ति? अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, बताओ। CO3-2 वैलेंसी फैक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, वैलेंसी फैक्टर 2। ओके, ये एक हो गया फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला था मैंने बता दिया। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। नाउ सेकंड, इफ आई टॉक अबाउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड, equivalent weight of the ionic compound, that is equal to equivalent weight of cation plus equivalent weight of anion। तो अभी मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास है H2SO4, H2SO4, और मैं बोल रहा हूँ इसका इक्विवेलेंट वेट कॉपी करो, तो केटायन कौन है यहाँ पे? यस, अगर कुछ आपको चार्ज नहीं दिया देन यू हैव टू फाइंड द वैलेंसी फैक्टर ऑन डिसोसिएशन। करेक्ट। यहाँ पे कैटायन है H+, बिकॉज ऑन डिसोसिएशन यू विल गेट 2H+ एंड SO4-2। सो ये मेरा कैटायन है, ये मेरा एनायन है। ठीक है, so atomic weight of hydrogen is 1, valency factor 1। so according to formula it will be equivalent weight of H plus equivalent weight of SO4-2। करेक्ट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना? 1 आएगा, प्लस SO4। अभी SO4 का मास फाइंड करो। 32 + 64 कितना होता है? 32 + 64 कितना होता है?
दैट इज इक्वल टू 96, करेक्ट। वैलेंसी फैक्टर क्या है SO4 का? अपॉन 2 कितना हो गया? 96 अपॉन 2 कितना होता है? करेक्ट। तो यहाँ पे मैं 48 लिखूंगा, तो कितना आएगा मुझे? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? 49। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 49। और SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना था? 48। समझा सबको? समझा? ओके, so next method for determining equivalent weight. Like number one method, please ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Number one method is called as hydrogen displacement method. Now, according to this method, the formula for the calculation of equivalent weight of metal is equal to weight of metal upon weight of hydrogen gas displaced multiplied by 1.008. तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन का मैंने कितना बताया था? 1.008 बाई पार्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड मेथड इज ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ऑक्साइड formation method. Oxide formation method. So now here the formula is equivalent weight of metal is equal to weight of metal upon weight of oxygen. और किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? कौन बताएगा मुझे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8, करेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड, chloride formation method. Chloride formation method. Now again the formula is equivalent weight of metal is equal to weight of metal upon weight of chlorine multiply by, क्या करेंगे? multiply by very good 35.5, and the last formula metal to metal displacement method. Metal to metal displacement method. जहाँ पे like consider we have two metal A and B. So two metal A and B. So according to this, the formula will be WA upon WB. That means weight of A upon weight of metal B is equal to equivalent weight of A upon equivalent weight of B. Clear? Understood? Weight of metal A upon weight of metal B is equal to
equivalent weight of A upon equivalent weight of B। तो यहाँ पे अगर किसी एक इक्विवेलेंट वेट अगर अपने एज ए रेफरेंस काम करेगा, एंड वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द अदर मेटल। क्लियर, अंडरस्टूड? तो ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। The next method for determining atomic weight, determining atomic weight। तो पहला तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, पहले तो हमने क्या देखा था कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, करेक्ट? तो यही फॉर्मूला हम वापस यूज कर सकते हैं एटॉमिक वेट कैलकुलेशन के लिए। हम ऐसे बोल सकते हैं कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। कभी कभी वैलेंसी फैक्टर को हम एन भी लिखते हैं, एन करके भी लिखा जाता है, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर को। ठीक है, सेकेंड जो मेथड है उसको बोलते हैं डुलोंग पेटिट लॉ। तो ये जो लॉ है ये बेसिकली अपने को हेल्प करता है कि अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट कितना आएगा, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं बताता है बट अप्रोक्स हम लोग को बता देता है। तो ये लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास, एंड मैं यहाँ पे क्लियरली लिख रहा हूँ अप्रोक्स, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्स। द फॉर्मूला इज 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। अगर आपको स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द अप्रोक्स एटॉमिक मास। ठीक है, लाइक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। लाइक द क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक हीट, the specific heat of a metal is 0.031 calories per degree, calories per degree per gram, and its equivalent weight, is 103.6. calculate exact atomic weight of metal, atomic weight of metal कैसे करेंगे, exact atomic weight of metal। चलो, so if I talk about this solution now, अगर मैं solution की बात करूं यहाँ पे तो कैसे करेंगे, will actually first use the Dulong-Petit law। ठीक है, जहां पे हमने पढ़ा था कि approx atomic weight is equal to 6.4 upon specific heat। अगर मैं ये यूज करता हूं तो 6.4 upon 0.031 which is given, so as per the formula you will get 206.45। तो ये मुझे अप्रॉक्स एटॉमिक वेट मिल गया है। Now we can go for the valency factor। Now valency factor is equal to atomic weight upon equivalent weight। तो मैं अप्रॉक्स एटॉमिक वेट लूंगा तो मुझे अप्रॉक्स वैलेंसी फैक्टर समझेगा कितना आने वाला है। तो एटॉमिक वेट कितना मिला है 206.45 और इक्विवेलेंट वेट कितना दिया हुआ है 103.6। क्या लगता है कितना होना चाहिए, आंसर आएगा 1.99 which can be taken as approximately 2, correct? Which can be taken as approximately 2, yes or no? So now we'll go for the exact atomic weight,
एग्जैक्ट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला देख सकते हो, एटॉमिक वेट इज इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मुझे इक्विवेलेंट वेट तो दिया था, तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है 103.6, एंड इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 207.2। सो दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट, देखो डुलोंग पेटिट लॉ से मुझे 206.45 आ रहा था, बट एक्चुअल में एटॉमिक मास कितना आया, एटॉमिक वेट कितना आया 207.2। समझा सबको कैसे करना होता है? तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट फाइंड करने के बाद हम लोग अप्रॉक्स वैलेंसी फैक्टर फाइंड करते हैं, और उसके बाद विल गो फॉर एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। क्लियर? So as you can see, a question, a chloride of an element contain 49.5% chlorine. That means मैंने बताया कि 45.9.5% chlorine. That means 49.5 gram chlorine and 50.5 gram metal, which will be used for the calculation of equivalent weight of metal by using the first formula. Equivalent weight of metal is equal to weight of metal upon the weight of chlorine, correct, and multiplied by 35.5। तो अगर आप देखो तो जो आंसर आएगा अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज वेट ऑफ मेटल 50.5 and 49.5 multiplied by 35.5, you will get answer 36.21। सबको इक्विवेलेंट वेट यही मिला होगा 36.21, 36.21। Now the second formula, the Dulong-Petit law, Dulong-Petit law, Dulong-Petit law। तो वहां पे हम लोग ने क्या फॉर्मूला देखा है कि अप्रॉक्स एटॉमिक वेट is equal to 6.4 upon specific heat. Now 6.4 upon specific heat is given as 0.064, जो कि आपको दिख रहा है कि अप्रॉक्स एटॉमिक वेट आपको 100 आएगा। इजी कैलकुलेशन था ये, 100 आ गया। तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट 100 आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला नंबर 3 में जाऊंगा, जहां पे मैंने पढ़ा है वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे आप देखो तो 100 अपॉन 36.21, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये कितना आने वाला है, 100 upon 36.21 will come 2.7, which can be taken as approximately 3, approximately 3। तो मेरा फोर्थ फॉर्मूला में क्या करूंगा, exact atomic weight, exact atomic weight is equal to equivalent weight multiplied by valency factor, that is 36.21 multiplied by 3. So you will get an answer of 108.63। So this is what my exact atomic weight of the element is। Everyone clear with this? समझा कैसे सॉल्व करना है?